gracias a la disciplina de mis padres, también a un gran esfuerzo mío, la verdad. Actualmente estoy con un tema psiquiátrico, tengo trastorno de ansiedad generalizada, entonces creo que la disciplina y la constancia es lo que más me ha llevado a estar donde estoy hoy. Antes lo regañábamos demasiado, o sea, porque pensábamos que era como perdiendo el tiempo ahí, y pues él estudiaba, entonces le apagábamos el internet a las 2 de la mañana y lo regañamos, pero él me decía, no más, yo estoy jugando bien. Entonces yo le decía, pero tienes que empezar primero en el estudio. Bueno, en el juego hay mucha comunicación, ¿cierto? Sí. Hay mucha comunicación, se tiene que hablar con los compañeros para jugar. Y él, por lo mismo, como sabía que nosotros lo estábamos escuchando o lo podíamos escuchar, él prácticamente en el juego no hablaba. Entonces le pusieron ahí un nombre que era el mudo, le pusieron el mudo. Pero no porque él no quisiera interactuar con los compañeros, sino porque en realidad tenía miedo de que nosotros lo escucháramos y que le quitáramos el teléfono, lo castigáramos o que lo mandáramos a dormir más temprano. Es que en un principio nosotros siempre pensábamos que era un hobby para él. O sea, siempre lo vimos así como padre, siempre lo vimos desde ese punto de vista, hasta que ahora vemos que ya es un poco más profesional, se podría decir. Al comienzo de proponerle esto de ser profesional costó un poco, costó lograr hacerle entender que es otro mundo aparte y que era mi sueño. Y de hecho el primer contrato que llegó de R7, cuando él cumplió 17 años, había una fecha límite para firmarlo. Y me acuerdo que estuvimos hasta el último día para firmar ese contrato, porque ahí le dijimos a él que tenía que asumir él un compromiso de que tenía que cumplir con sus estudios y a la vez nosotros le íbamos a permitir que él jugara. Bueno, mi rutina empieza a las 7 de la mañana, me levanto, me baño, desayuno, me visto y ya de ahí a las 8 tengo que estar en el colegio, que empiezan mis clases. Normalmente tengo un horario de 8 a 3:15 y algunos días salgo a las 5 de la tarde. Después llego, como algo si es que me da el tiempo, y si no ya directo a los entrenamientos o a los torneos que tenga. Media hora, 1 hora de estudio cuando tengo algún examen o algo, y ya si hay algo más para la tarde-noche, algún torneo, pues lo termino jugando. Del día a día, pues yo literal no salgo de mi casa, pues me levanto, pues me lavo la cara, me cepillo y literal me pongo a jugar, a entrenar, y luego almuerzo, después del primer bloque y almuerzo y me pongo a jugar el segundo bloque y ya eso es todo. Bueno, la verdad fue difícil elegir entre mi graduación y el viaje. Siempre quise graduarme con mis compañeros de curso, ya que llevo 14 años en el mismo colegio. Pero creo que viajar un mes a Yakarta no cualquiera tiene esa oportunidad, y más con todo pagado. Entonces veremos qué sucede allá en Yakarta. Pues de cara al mundial, pues me veo la verdad muy bien, ya que el mundial pasado pues me quedé con una espinita de pasar a la final, que no pasé literal por un punto, que fue el desempate. Mi principal motivación es mi mamá y mi papá y mi hermano que están en el centro. Y pues sí, me siento muy motivado para este mundial que viene. The battlefield of Free Fire is evolving once again. OB521 isn't just another update, it's a full-on meta shift. Loadouts redefined, arsenals upgraded, and the rules of revival rewritten. This is the new landscape every FFWS finalist must adapt to, or be left behind.
break down the ultimate game changer, Loadout 3.0. The shift from solo gear to team economy is absolute. Enhance Hammer lets you instantly upgrade a teammate's weapon. One red tier gun can determine who wins that early scramble. Tactical Market introduces Boldmaker zones for smart control, and the Super Leg Pocket combines essential survival items into one resilient tool. The old meta is dead. Coordination is key. Triple kill. This meta was practically built for the aggressive roaming giants. Teams like RRQ and Booyahs United thrive on early momentum, and now they have zero excuses. The weapon rack guarantees a gun off the drop, and the Enhance Hammer ensures their first rush hits lethally hard. They will dominate the kill point race, setting the pace for the entire lobby. But the mid-game masters, the teams that are start safe but always ready for combat like Fluxo and R7, get their own safety nets. The Super Revival Point fights because a revived ally returns with a much better chance to stabilize. They can leverage the gold accumulated from safe rotations into the upgradable arsenal, ensuring their late-game inventory is overwhelmingly superior. Now, let's talk defense. Survival-focused squads like Heavy gain endurance from the Super Leg Pocket and new glue mushrooms that add healing to their fortifications. But there is a massive counter. The new character Nero is the ultimate anti-fortification tool. His skill generates a field that prevents all glue wall placement and drains health inside. This is the new key to breaking up stubborn late-game holds. Survival teams must adapt or they'll be defenseless. In Loadout 3.0, the Team Booster stands out as the most strategic upgrade. It will be a must-have item for all teams. Each Team Booster user can choose up to 3 of 6 buffs, with the first slot being free and the next 2 being unlocked with coins. These buffs can increase healing, movement, or team coordination, making the team economy a key part of mid-game planning and opening up a myriad of new gameplay combinations. Commanding concluding. So who benefits most? While every playstyle gains a new tool, the pure early game consistency provided by the weapon rack and the Enhance Hammer turbocharges the aggressive approach. Our final take? RRQ and Booyahs United are best poised to ride this acceleration to the top. They'll dominate early kills, and the new resilience tools will secure their late game push. Get ready for an FFWS Grand Finals where the early birds definitely catch the win. What's your prediction for the FFWS Grand Finals? Let us know in the comments below, and don't miss the action.
Fluxo stormed through Heavy's defenses with glue wall melter, freeze grenade, and eliminated Heavy. Box 57 backing away. Alan has got the grenade launcher. Just needs a good pop here. Boom! WAG trapped Evos in a room of death, and Export's perfectly timed M79 blast erased them in an instant. Dudes turned RRQ's house into a horror show for AG, leading a perfectly coordinated assault that ended with his deadly triple kill. Heavy snuffed out E1's fire as Allen's perfectly timed M79 blast wiped them out in one calculated strike. Fluxo deemed Hotshot unworthy, raining Hellfire with the new Bolt Maker to chip away their health and secure a swift team wipe. Here is how the standings look. After another unforgettable Week 1 of FFWS 2025, the race for the crown only grows fiercer. Salute the teams, for they are the architects of history. And next week, new legends awaits. Escreve história. พวกเราจะพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานถึงเวลาเอาแชมป์โลกกลับบ้านแล้วครับ Pressure can crush, pressure can crack, but pressure can also create strength. Only those who persevere
Kung ano na. Welcome to Booyahs. Welcome to Now. Let me guess. 2 players and a whole lot of chaos. Tries to guess what's going on in Free Fire. Alô. Mano, acho que esse primeiro aí eu saí 7. Não, é agora isso aqui. Não. Quase. Xin giáp nha. Đúng, xin giáp. Hayato. Onegizi. Hayato. Coba. Halo. Nah ini apa? Alvaro. Betul sekali. Dimitri. Hayato. Misha. I guess this is Biston. Baik, itu tuh Amar pen. Baik, Biston. Oh, si Spirit Fox. Next. Này là con cáo. Con cáo nha, con bé này nó tên là Phan. Man. Dok. Ini apa nih? Lu tau nggak? Gak tahu. Ini namanya di Purgatornya kan ada golf course. Oke, semua golf course. Khu mình đúng không ta? Khu Gateway, làng Kim Nam. Có cái đảo nhỏ đó, chắc chắn là làng Kim Nam rồi. Gampang banget ini drop zone RRQ Cidok. Nah kalau misalnya ini drop zone heavy militia. Banyak pokoknya mah. Intellect Center. Some guesses are right, some are wrong. But either way, it's easy for them and hard for us. That's all for now. Bye bye guys. Bye bye. Và bọn mình là Gao Esports. Cảm ơn mọi người. Bọn mình đến từ Heavy. Setelah tebak-tebakan kita dan sangat mudah. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like. Bye bye. Welcome to Booyahs. Welcome to the Free Fire World Series Global Finals 2025. 18 of the best teams from around the globe are here for one goal: to be crowned the next world champion and to take their share of $1.50 million in prize pool. That's $1 million for Battle Royale and $150,000 for Flash Flood. Amazing, right? It all begins with the knockout stage running from October 31st to November 9th. 18 teams will be divided into 3 groups of 6. Group A, B, and C will go on a cross match amongst them. The top 8 teams will then qualify to the Clash Squad. It all be decided on the first week. And on the second week, that is the last final sprint to the grand finals. Every point counts. At the end of the knockout stage, the last 12 teams standing will then advance to the grand finals, and the 6 bottom teams will be eliminated. The Grand Finals, also known as Champion Rush, takes place in November 15th. And the rules are pretty simple. The first team to reach 80 points and secure a Booyah will then be crowned the next world champion. If there's no team who succeeds to secure a Booyah while having 80 points, then the champion will be decided by the highest total points. Every rotation, every fight, and every Booyah will decide who's going to be the next world champion. Before we head into the Battle Royale Champion Rush, let's take a detour to the Clash Squad tournament. So the teams competing are the best 8 teams from the first week final rankings. The format follows a best of 3 series, and they will be played as Swiss format. So the winner
your route. Win all the way through and you will be crowned the Clash champion. Alright, survivors, my name is Conchita and it is the format of Free Fire World Series Global Finals 2025.ก็ถ้าคุณจะลุ้นแชมป์ก็ถ้ามีผมอยู่ก็คุณก็ไม่ได้แชมป์หรอกครับ Página, sombong banget. Gimana, Mam? On fire. Apa itu on fire? Emang sesuai sama nama dia? ก็รู้เรื่องครับเดี๋ยวมาจับก็ไม่อะไรมากหรอกก็รอดูในเกมดีกว่า Apa Wasana nih? Ya, buat Wasana, fokus aja lah ke gameplay sendiri. Ini di Indonesia, hati-hati ya. เดินเข้าวงดีๆนะครับระวังเจอพวกผมดักตีหน้าวงครับ Dia mau apa? Hajar kita kan nanti di step mapnya. Ya kalau menang, kalau kalah gimana? Pikirkan tim kalian dulu aja. ถึงกันมาครับถ้าอยากโหดก็กินเยอะนะครับเหมือนทีมผมโหดครับ ขอปลดล็อกแล้วแบบบูย่าเลยได้ไหมผมไม่อยากเห็นทุกคนต้องร้องไห้เลย Yes, shut up ทีมที่พูดเดี๋ยว suka kali tak bilang mas. So, where do we start? Well, a lot has happened in FFWS. Unpredictable sets, unmet expectations, unfinished rivalries. We have no time to lose. So, the defending champion Fluxo came to Jakarta with a statement performance, winning 178 points in the first week and a whopping 34 eliminations from MT7. Many teams will try to threaten Fluxo title defense. The question stands, who has the audacity to do that? I think movie star R7 Games is the prime suspect. Our intel found a very shocking comment from the LATAM Wonder People side. Fluxo, ya que el idioma serie no fue un rival para nosotros, entonces en la Free Fire World Series Finals Global tampoco será la excepción. Sobre o Games King e todo o time dele aí da R7, eu acho que eles falam, eles não foram campeões na região deles, eles não têm bala e não têm histórico para falar de nós, eles são famosos star players que só falam e não fazem nada. Last year, not a single LATAM team made it to the grand finals. Now, they challenge the champions. Well, the West has certainly met their expectations, but the East, I don't think I could say the same for Booyahs or EPOS. Despite recruiting Mafia, the Wonder Kid might not be able to help EVOS escape their fate of missing out on grand finals again. Only has one unlucky team. We've got another. What is the possibilities of 4 Vietnam teams qualifying for the grand final? Esports is looking strong
Dull and heavy still, it's pretty consistent. The Esports motor is leading the charts, and we have two heavy Booyahs for heavies nearly recruits. Speaking of that, I think his ex-team needs to reevaluate their tactics. This WAG is struggling right now. It's unfortunate for the Champions contenders, Thailand, Team Falcons, and Booyahs. But Gamers Global have been crushing all doubts. I know, right? AG earned a well-deserved Team of the Day on this one. But despite all the upsets and surprises that is happening in FFWS, that does not change the fate for some teams like Red Hawks, Red Cliffs, Hotshot, and Clear Vision who are still falling behind in points. Well, 1 week from now, what happened to the grand final? Welcome back, survivors! Selamat datang kembali di Free Fire World Series yang pastinya sudah hadir di sini di Global Finals 2025 live from Jakarta, Indonesia. We are officially back into the Battle Royale mode into week 2 of the knockout stage. Yes, and the tension is definitely higher than ever. Every point, every round, and every decision now carries a massive weight. Yes, and today's theme is Hope or Havoc. For some, it's the hope to rise higher, and for others, it's the fight to survive the storm. Momentum is fragile. One great day can ignite a miracle run, but one bad day can destroy everything. Today, we return to one of the most intense combinations yet, the Monster Lobby, featuring teams from Group A and Group C. The top teams like Fluxo, R7, and P Esports want to keep their rhythm steady and, of course, secure the spot in the grand finals. Meanwhile, the mid-pack teams like E1, AG, Heavy, Go, and Team Solid, they need to stay consistent in this lobby to stay in the fight, Yunsul. For Booyahs United Esports and Team Falcons, the mission is clear. Find their form or risk falling off from contention. And for WAG and Red Hawks, it is now or never. They'll need something extraordinary to keep their dream alive. The comedy has been loud, from positive cheers to harsh criticism. Every comment adds to the weight of wishes. Hope or havoc, dream or disaster, choose your own fate. The stage is ready. The teams are waiting. Who will keep their hopes alive? And who will spiral into havoc? This is week 2, day 1 of the knockout stage. Free Fire World Series Global Finals 2025. Casters, the stage is yours. Take it away and good luck! कल के दिन पे हमने देखा AGAL, फ्लुक्सो, मूवी स्टार R7 एंड हमारी टीम हैवी, ये चारों टीम्स क्लैश स्क्वाड के ग्रैंड फिनाले डे के लिए अपनी जगह बनाती हुई नजर आई। और आज के दिन से शुरुआत होगी हमारे वीक 2 की बैटल रॉयल की, और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 3 दिन के मुकाबले होंगे और उसके बाद हमें मिलेंगी अपनी टॉप 12 टीम्स ग्रैंड फाइनल्स के लिए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज 2025 ग्लोबल फाइनल्स में। मैं हूं आपका दोस्त और इनसेन अरीना, और आज के दिन की इनसेन शुरुआत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली कास्टर और मेरे काबिल दोस्त चिरायू। कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम इनसेन भाई। मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ आज के इस दिन के लिए, बिकॉज जैसा कि आपने कहा भी, आखिरी वीक है, ये आखिरी 3 दिन है, जिसमें से 2 दिन आपको तो परफॉर्म करना है और 1 दिन फिंगर क्रॉस करके बैठना है कि ये स्क्वाड अच्छा ना खेले, वरना हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बट देखते, खैर वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन अच्छा खेलेगा कौन नहीं। क्या कुछ बॉटम की टीम्स यहाँ पर से कमबैक करते हुए नजर आने वाली है, या फिर टॉप टीम्स अपनी जगह टॉप पर ही बनाए रखने वाली है, बिकॉज जैसे तैसे करके आपको अपनी जगह बनानी है टॉप 12 के अंदर। अगर आप 12 टीम्स में नहीं आए तो फिर आप बीआर स्टेज से भी हो जाएंगे बाहर। हमने कुछ टीमों को अभी क्लैश स्क्वाड से बाहर होते देखा, हमने कुछ टीमों को क्लैश स्क्वाड में ग्रैंड फाइनल्स एंड सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करते देखा। क्या यहाँ पर से बैटल रॉयल में आप कुछ ताबड़तोड़ परफॉर्म कर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। इस समय पे बॉटम में कुछ कमाल की टीम बैठी हुई है जिनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है हमें इस हफ्ते के लिए। बट फिलहाल के लिए हम अपने टूर्नामेंट शेड्यूल की बात करें तो पिछला हफ्ता हमने देखा था 31, 1 और 2 तारीख 3 दिन के मुकाबले थे, और आज से हमारा वीक 2 स्टार्ट हो रहा है नॉकआउट स्टेज का। 7, 8, 9 3 दिन का ये मुकाबले होंगे। हर दिन हमें 6 मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं, और जो ग्रुप्स होंगे A, C, A, B, B, C करके इस तरीके से 3 दिन में स्प्लिट ये देखने को मिलेगा। और ये लीजिए मैच फॉर्मेट भी हमारे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे इस हफ्ते के
AB, BC एंड AC, इस प्रकार से तीनों जो ग्रुप्स हैं वो खेलते हुए नजर आएंगे। और पिछले हफ्ते हर एक ग्रुप ने 12 मुकाबले खेले थे। इस हफ्ते में भी हमें हर एक ग्रुप के द्वारा 12 मुकाबले देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आखिरी दिन के अंत में हमें मिलेंगी अपनी टॉप 12 टीम्स, जो मिलेंगी हमें 15 नवंबर को ग्रैंड फिनाले में। बहुत बड़ा स्टेज है, बहुत बड़ा प्राइस पूल है, तो प्रेशर भी उतना ही बड़ा होगा चिरायु हर एक टीम पे। प्रेशर तो है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट साल का फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज ग्लोबल फाइनल्स। और अगर आप यहाँ पर परफॉर्म नहीं करने वाले तो फिर कहाँ करोगे? यहाँ आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना दिक्कतें हो सकती है। ये काफी कुछ है स्टैक पे। अगर आप चैंपियंस को देखो तो डायरेक्ट $300,000 का वो प्राइज आपको मिलता है। वहीं पर आप सारे रैंकिंग्स के हिसाब से प्राइस देख सकते हैं, एक एक करके वो प्राइस हल्का हल्का गिरता जाता है, बिकॉज कुछ ना कुछ तो ज्यादा रखना चाहिए ना। अगर आप चैंपियन बन रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा अमाउंट मिलने वाला है। एंड दीज आर द स्टैक्स ऑन द टेबल, जिसके लिए आप यहाँ पर से फाइट करते हुए नजर आएंगे, कम्पीट करते हुए नजर आएंगे, एंड जिसके लिए एक लाइफ चेंजिंग बनी यहाँ पर से दिखाई देने वाला है। बट वहीं पर अगर मैं पॉइंट सिस्टम की बात करूँ, यहाँ पर से हमको वही स्टैंडर्ड रूल्स पॉइंट्स के दिखाई देते हैं। टॉप 1 को यहाँ पर 12 पॉइंट मिलते हैं, सेकंड को 9, वहीं पर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 गिरते चले जाते हैं। बट 11th एंड 12th को वही पॉइंट नहीं मिलता। वही देखिए, अगर आप पोजीशन पॉइंट सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं तो एलिमिनेशन के पॉइंट्स आप सिक्योर कर सकते हैं। उतरिए और फाइट में एंगेज कीजिए। जितने ज्यादा एलिमिनेशंस आप निकालेंगे उतने अंक आपको मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ देखिए, बुया के अंक तो हमने डिस्कस कर ही लिए। दिस इज द पॉइंट सिस्टम राइट नाउ। हर एक टीम, हर एक खिलाड़ी अच्छे से समझता है। लेकिन हम अपने 1 यूनिक एक्टिव स्किल रूल के बारे में बात कर लेते हैं। चारों खिलाड़ी 4 अलग अलग डिस्टिंक्ट यूनिक एक्टिव स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे। एवरी प्लेयर हैज टू यूज एन एक्टिव स्किल। एवरी प्लेयर इन द टीम नीड्स टू यूज अ डिफरेंट एक्टिव स्किल। यानी कि अगर एक प्लेयर का तात्सुया है तो वो तात्सुया एक्टिव स्किल कोई और यूज नहीं कर सकता। इस प्रकार से 1 यूनिक एक्टिव स्किल का रूल हम रेगुलरली विटनेस कर रहे हैं। और अब इस पर्टिकुलर रूल से हमें अलग अलग कैरेक्टर एबिलिटीज के कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, एक्टिव स्किल्स के कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। और साथ में उन एक्टिव स्किल्स के साथ किस प्रकार से अलग अलग पैसिव स्किल्स का प्रयोग किया जा सकता है आपके बेनिफिट के लिए गेम के अंदर, वो भी हमें बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है। बट फिलहाल के लिए चिरायु, लेट्स मूव ऑन टू 3 दिन के मुकाबले। हर एक टीम को 12 मुकाबले खेलने को मिले थे। फ्लुक्सो ने टॉप किया था चार्ट, 178 पॉइंट्स इन 12 गेम्स। बहुत ही शानदार मुकाबला, बहुत ही शानदार प्रदर्शन, काफी ज्यादा कंसिस्टेंट। 2 बुया भी लगाए। पहले नंबर पे इवॉस कौन सी टीम है? इवॉस है तेरी, इवॉस नीचे यार, इवॉस यहाँ है, इवॉस डिवाइन। 13 नंबर पे इवॉस, तो यार इवॉस डिवाइन है। कौन सी टीम, कहाँ की टीम है? कौन सा झंडा ही है? रेड टू रेड क्या पूछना? कौन सा कुरकुरा? हां, कौन सा कुरकुरा? मसाला मंच और कौन सा कुरकुरा? अरे पूछा ना, जो आपने खाना 4 होते भाई। इवॉस और आरआरक्यू यार, ये जहाँ पे मैच हो रहे यार, कहाँ पे हो रहे मैच पता है तेरे को? नेम इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की टीम है ये। ओके, क्या करेंगे हम देश में भाई? आरआरक्यू काजू, इन्होंने भी 173 पॉइंट्स लगाए। पी स्पोर्ट्स 171 पॉइंट्स, मूवी स्टार R7 154 पॉइंट्स, इवन ई स्पोर्ट्स 151 पॉइंट्स एंड चिरायु। अगर हम इस पॉइंट्स टेबल को देखें तो मेरा मानना है कि पहली 3 टीम्स काफी हद तक 70-80% अपना काम कर चुके हैं। 70-80% इन्होंने जो है